Hello and welcome back to another episode of Take Two's Honest Opinion. For today's episode, we are going to be reviewing the Hotstar's new original, Arya. A Disney Plus Hotstar series. It's an Indian version of the Dutch series Penzo. Let's talk about the basic plot. It's about a woman and a man, Chandrachud Singh as Tej. The illegal medicines का business होता है, and then there is drug dealing, and then there is murders, and then there is gunshots. And कैसे वो एक सिंपल सी दिखने वाली फैमिली के डार्क सीक्रेट्स रिवील होते हैं अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर नेम्ड आर्या. आर्या को फैमिली को मैनेज करना है, बिजनेस को मैनेज करता है, एंड शी टेक्स अप हर हस्बैंड्स बिजनेस टू टेक Survive the रिवेंज family. And and so make her survive the family through all this crisis. There are a lot of twists and turns. that So, you would Shweta, not what do like you love to. about Arya? So what I love about Arya is, often we see in movies, no, कि main character ने at some point the main character has figured out, the lead has figured out कि oh this is wrong. But in Hmm. this particular show, at one point the showmakers show you कि you know what happened? This. And then Hmm. you're wondering, you just want to go inside the screen and tell Arya, ki, And Arya, tell this her, is what ha, happened. Arya, this is what happened. he's And talking special. about the sets, okay, the sets were just मतलब amazing. उन्होंने जो locations उन्होंने choose की थी, जो setup उन्होंने बनाया था, it is a skill. एंड उन्होंने राजस्थान में सेटअप किया. इट्स लाइक द रॉयल, मतलब एक रॉयल टच था उस पूरी They haven't missed सिटी. the grandeur of Rajasthan at all. उन्होंने they made sure कि वो हर जगह महलों का वो effect and the richness that there is in Rajasthan वो capture करें. वो So डॉन्स that's को भी म्यूजियम तक में मिलने जाती थी. उन्होंने जिस तरीके से उसका उसका जो एक वर्ल्ड था जो आर्या के अराउंड बिल्ड किया उसकी फैमिली का, ऐसे लग रहा था कि वी आर अ पार्ट ऑफ इट. सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी, क्योंकि यूजुअली आप सेकंड लास्ट एपिसोड तक गेस कर लेते हो कि ये है, बट इस सीरीज में मुझे लास्ट मोमेंट तक, जब तक आर्या को नहीं पता लगता कि ये किसने किया है, तब तक मैं भी कुछ और ही सोच रहा होता हूँ. you are aware of what's happened, but you don't really know what happened. So So not talking talking about about the supporting actors. I think you talking about that only? yeah, yeah, Yeah. That needs to be talked about because supporting actors जो थे वो supporting नहीं थे सिर्फ, they were like really brilliant. And firstly credits to the creators, Ram Madhwani and Sandeep Modi, who also directed it along with Vinod Rawat. So these three were the directors. Ram Madhwani, who has also made Neerja पहले. तो ही उसकी एक स्ट्रेंथ है दैट ही यूजेस हिज एक्टर्स सो वेल. और मुझे देख के लगा कि यार ये सपोर्टिंग एक्टर्स जो थे, देवर, इनको कितने टाइम से नहीं देखा हमने. विच आर योर फेवरेट कैरेक्टर्स, बिकॉज एक तो नहीं हो सकता इसके अंदर. so my favorite character is definitely going to be Daulat's character, Sikandar Kher, because of the sheer innocence that the character plays, even though the kind of work that he does. That's all I'm going to say. Because it is just shown beautifully and he has portrayed the he's मतलब घुस गया है वो रोल के अंदर, तो you can believe कि okay this guy is दौलत. If even मतलब down the line कभी मैं दौलत सुनूंगी ना, his face will come in front of my eyes. उसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, so that definitely वो that. फैमिली. Also I would like to mention Namit Das, because Namit Das ने जो रोल उसने प्ले किया है ना, he portrayed what he was supposed to do. जो उसमें एक जवाहर. फीलिंग ऑफ ये आनी थी ना, लाइक डिस्ट्रस्ट की जो उससे फीलिंग आनी थी ना, वो तुम्हें स्क्रीन के पार से आ गई कि यार कांट ट्रस्ट दिस मैन वाली. सो इट वाज वेरी गुड. दौलत का जो फैमिली लॉयलिस्ट जो एक होता है वो हुकुम हुकुम, अरे वो मतलब आई वाज लाइक कि ये बंदा तो मतलब एकदम ऐसे लग रहा था मुझे कि अब मैं इसको कहीं पे भी देखूंगा ना, मुझे ये याद आएगा, अरे ये तो या की फैमिली का लॉयलिस्ट आदमी है. बिकॉज हाँ वही की दौलत बन चुका है वो काइंड ऑफ मेरे हाँ. लिए. मतलब अगर देखें तो सबसे कम ड्रामा उसने किया है पूरी सीरीज में. एकदम शांत ऐसे स्टोन फेस He लेके knew सारे. what is getting into, what he's हाँ. getting. I really love the character of Maya Sarao. She was in Thappad as well. She plays Maya in this as well. और वो जवाहर की वाइफ का रोल प्ले करती है. And oh God, this was so epic. इतनी Very good. उसका जो वो she is like a bystander who is watching everything breaking down. Yes, लाइक correct. उसके आसपास सब टूट रहा है और वो बंदी कंट्रोल नहीं कर पा रही है. वो रो भी रही है और वो गुस्सा भी निकाल रही है, फ्रस्ट्रेट भी हो रही है, और वो दिख रहा है. मतलब उसको दिख के लग रहा था कि यार कितनी फ्रस्ट्रेटेड मतलब है you ये. can see that character build, like first episode से लेके last episode, the change in her tone and the change in her
entire Exactly. physique is quite kind of visible and it's very That beautiful. hairstyle, yaar. What a Gotha hairstyle. has been, I think she's now known for uh, hairstyles that stand out, and she can carry them that well. You know, whatever she's wearing, at one point she's wearing a sari and a trench coat, and she has the हाँ, hairdo, and it still looks bomb. So, I think. A big shout out to विकास कुमार, द कैरेक्टर हु प्लेज एसीपी खान. वो पुलिस चोर वाला जो एक खेल होता है कॉन्स्टेंटली, वो उसके घर के बाहर ही बैठे रहते हैं नजर रखने के लिए कि ये कहाँ जा रही है, मैं इसके पीछे पीछे जाऊं बस. जयंत कृपलानी वाज आर्या's फादर. मनीष चौधरी वाज शेखावत. उसके अराउंड भी एक बहुत अजीब मिस्ट्री थी. मतलब हाँ, मुझे लग रहा था कि इसको भी ट्रस्ट कर सकते हैं, हाँ, नहीं कर सकते, should I सब or ग्रेट should I थे. not? मतलब Yes. सब मतलब ये कैरेक्टर्स ग्रेट. entire movie, हाँ, ये एक ऐसी movie थी ना which was perfect thriller because it showed you parts of black and white, but you can still not connect the entire. Even after the series is over, you are just still wondering about those characters. You're left thinking about those characters, which is मतलब अंकुर भाटिया का संग्राम. रोल, या संग्राम सिंह का रोल उसने किया था, बहुत ही अमेजिंग था. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन आर्या's kids, the characters who play Arya's kids in this movie. Veerti Bhagani was the girl Arundhati, and Viren was Veer, and Pratyaksh Panwar was the little boy named Adi, and his acting was also so on point. इतनी ऑनेस्ट थी वो. हाँ, honestly, इतनी cute थी. It was visible कि the characters had done so much work to, you know, coordinate with each other behind the screens कि they were just flowing on the screen. वार्मथ आती है उनको देख के एक Yeah, yeah, फैमिली. सही में. हाँ. I was so amazed कि how cleverly they have used retro songs in that. बड़े अच्छे लगते हैं अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो. और And that whether use it of was Geeta in the entire scenario. I don't uh, want to reveal too much, but that is one there are bit a that lot of Geeta references in the series. पूरी सीरीज series. में इतना बता सकते हैं बस. And they are very well explained and very well connected. So, and the पढ़ने का way मन it करता है. unfolds, it actually unfolds on screen. हाँ. They read verses from the Gita and they unfold. So that I would like to really salute the writers because it is एंड just वो सॉन्ग्स जो होते हैं मतलब एक पूरा रेट्रो वाइब, और कई बार तो सॉन्ग मैच करता है उसके साथ. वेदर, और फिर जब वो रूप तेरा sometimes the song is मस्ताना. contemporary. हाँ, Uh, रूप तेरा मस्ताना, खोया खोया चांद. yes. और वो पूरा मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है. और वो मुझे अभी भी याद है एक सीन विच आई कैन नॉट रिवील, बट इट वाज अबाउट बड़े अच्छे लगते हो है चल रहा होता है बैकग्राउंड में, शी इज वॉकिंग एंड देयर इज ब्लड स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, और दैट लीड्स टू अ रूम एंड देयर शी सीज फुल ऑफ ब्लड विद द बॉडी. एंड वो जो था ना, वो मतलब आई वाज लाइक ओ गॉड, सच अ हैप्पी सॉन्ग और सच अ ट्रेजिक हाँ. incident that happened, and that was like oh god वो कितना. उन्होंने डायलेमा जो शो किया है ना by using songs that you actually feel, मतलब sometimes you're happy about something and suddenly something happens and poof your mood goes. So they uh, haven't just acted it out, they've connected it with songs that we all have known for all right, so ages. now the highlight of the show, Sushmita Sen in and as Arya. भरोसा In वही Arya, तोड़ते हैं. oh god, मतलब she's back. praise And the woman, bring her back. I want to see more of Sushmita Sen on screen. मतलब I cannot compare her to any other web series character who has played actor who has played such a strong character. मतलब there have been a couple of shows which have which are leading ladies, but this one, it sets a bar somewhere where people will have to struggle to reach. Definitely. और स्टार्टिंग में शी इज, जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है मुझे लगता है अरे ये तो सुष्मिता सेन ही है वो, बिकॉज हाँ. उसके इंस्टाग्राम पे Was देख on चुके हैं वो सब. Instagram, yes, correct. She हाँ, also यही मतलब that I really want to it is very commendable कि उन्होंने actual characters को उतारा है उसमें with सारा their है. हाँ. personalities. But when she blends into Arya, मतलब I think by second episode मैं समझ, मेरे को, मैं भूल चुका था कि ये सुष्मिता सेन है. लाइक ये तो आर्या ही है. Yeah. एंड वो आर्या सरीफ के कैरेक्टर में वो एक रॉयल, मतलब रिच फैमिली से लेके एक एलिगेंट वाइफ से अचानक से वो कैसे एक बिजनेस वुमन, एक ड्रग डीलर की वाइफ बन जाती है, एक डॉन बन जाती है. दैट इज लाइक ओ गॉड सो एपिक. And और वो the lines, there's this line that she says
कि जब आई थिंक जब आर उसको बोलता है कि अब क्यों उतर रही है बिजनेस में, क्योंकि पहले मर्द हाँ करते थे अब बच्चे नहीं। ओह, oh a god. mind blown and the and sh- delivery of that line. and she's looking so perfect in every scene. Oh god, amazing. मतलब मैं तो फैन हो गया, मतलब मैं फैन था ही उसका, बट अभी से आई एम लाइक सुष्मिता सेन शुड कम बैक Yeah, more often on screen. She gets into the skin of Arya and then she yeah. pulls it off so And there's a brilliantly. transformation, that happens. इतना brilliantly होता है भाई वो. It is not like usually when you see in thriller movies, there's a switch that flips. कि things were going good and then something bad happens and flip, characters Hmm. change. ऐसा नहीं हुआ. The characters slowly developed inside the series. मतलब it is major binge watch. It is binge watch. It is the binge watch content that you were waiting for in lockdown. So go watch it. जो वो अपने बच्चों से बात भी करती है, इट्स लाइक कि अरे ये तो इसी के बच्चे हैं, वो हर सेंटेंस के बोलेगी पर हम ऐसा नहीं कर सकते ना जान, पर हाँ बच्चा वैसे सच नॉट में पॉसिबल। या ओ गॉड, दिस इज सुष्मिता सेन बट दिस इज आर्या, सो इट्स लाइक या बहुत अमेजिंग कल्मिनेशन था दोनों का। एंड कूडोज टू सुष्मिता सेन एज वेल एज कूडोज टू द डायरेक्टर्स जिन्होंने उसको एक तरीके से, it was like she is feeling everything that is happening, so she is like Arya Abhi. So that was like the major and highlight the of the main series. the main message that Arya puts out is whatever happens, you've got to be strong for those who are there right now. There's a certain importance of the past, but then future of She says everything it matters also. more. Yeah, she says Past, it. past is not of value, but the future Value. is. So I need to realize that, and that's when that's when something happens in the character that can't be reversed. She's, So I'll be waiting for the second season, definitely. yeah, they leave it on So a second season yeah, आएगा. there is a cliffhanger at the end. Not exactly a cliffhanger, but like a question. I would A like to say question, it is a question, right, Dhruv? It is a but evident है question, कि quite second season literally. तो आएगा ही आएगा. On a take two watchometer, how much did you enjoy watching it, Shweta? Oh God, if I could say 100%, I would. But there was certain एक दो चीजें तो यार लगी जाती है किसी चीज में. So I would say हाँ. 92%. बहुत thoughtfully I'll say 92%. For me, it would be 80 to 85%, 85% बोल लो, because कुछ दो एपिसोड्स 45 से एक्सटेंड होके 50 to 55 मिनट्स के हैं और वो मुझे थोड़े लंबे लगे, बस उस I चक्कर didn't में। और realize the length, but there were some characters, I would like to know more. But then there's going to be a second season. So that is why I'm rating it at 92 कि second season में तो मेरी curiosity खत्म करोगे क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आर्या इज अ लवली सीरीज। To sum up, I would like to say Arya is a perfect blend of all the emotions that you could feel at once. It shows you, and it is a show, it is a series that makes you live with it. You can't just be like, oh, screen pe ho raha hai. You are with them. And that's the beauty of Arya.